Hello everyone, welcome to Genshin Impact 3.1 live stream or as per title Cyno gameplay and many other characters। भाई बहुत सारे characters मेरे अभी open हुए हैं नए नए और मैं सबको try कर रहा हूँ। So this is very cute सायू और इसकी जो पार्स हैं बहुत ही क्यूट है यार, ये बहुत ही सही है। और ये बच्चे है जैसे ये है और डोरी ज़्यादा छोटे होते हैं, ये हाथे उठा के एकदम मस्ती में भागते हैं। और अभी हम करने वाले हैं आर्कॉन क्वेस्ट और उसके लिए जो मेरा पार्टी सेटअप रहेगा वो रहेगा माई पार्टी 2 थोमा कैंडन सायू एचएचपी। एचएचपी इज द ट्रैवलर, ओके। और साइनो इज इन माई पार्टी 1। सो जब ज़्यादा हैवी फाइट होगी तब हम अपनी पार्टी 1 पे जाएंगे। अभी हम पार्टी 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बिफोर वी गो एक कैरेक्टर सेटअप थोड़ा सा करना है। सो जो ये मेरा न्यू कैरेक्टर है थोमा, अभी इसको मैंने कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं दिए, तो लेट मी सी द टैलेंट्स। आई थिंक इसका हीलिंग टैलेंट थे। ओके ओके, नाइस 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 नाइस। Walls forward with his polearm and delivers a flame-filled flying kick that deals with this. Okay, forward with his polearm and delivers a flame-filled flying kick that deals pyro damage while also summoning a defensive blazing barrier। बैरियर भी बनाएगा और अटैक भी करेगा। एट द मोमेंट ऑफ कास्टिंग थोमा एलिमेंट स्किल अप्लाइज। एक सेकेंड, हाँ, नाइस नाइस। So at the moment of casting elemental skill Pyro himself, the damage observation of the blazing barrier scales Thoma max HP. So Thoma maxes blazing has the following traits: absorb pyro damage by 250%. When in new blazing barriers obtain the remaining damage absorption of an existing blazing barrier. Hello Sinchan, thank you for your lovely wishes, thank you। He is Thoma। बहुत सारे नए कैरेक्टर मिले हैं मेरे को, अभी सबसे तेरा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। Barrier will be stoked and its duration will be refreshed. The maximum damage of the blazing barrier will not exceed a certain percentage of Thoma's HP. Okay. Skill damage 146%, 7.2% max HP plus 693, 8 seconds, 19 max HP plus 1887. Cooldown is 15 seconds. What is this? Thoma spins is this, slicing at his foes. Okay, while this is in effect, the active character's normal attacks will trigger fiery collapse, dealing this and summoning a blazing barrier. Every collapse can be triggered once every 1 second, except for the amount of damage they can absorb. The blazing barriers created in the way are identical to those. And okay, so इसकी जो अल्टीमेट है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ में हमारा जो ब्लेजिंग ब्लेसिंग है ये भी चालू हो जाएगी और ये मतलब हमारे को हील भी करेगा, सॉरी नॉट हील करेगा, डिफेंस करेगा। ओके, सो आई नीड लॉट ऑफ गुड एचपी। हेलो लूफी, स्टॉप स्पैमिंग कैप्स। ओह लूफी कैप्स मत डाल, नाइटबॉट ने पकड़ लिया तेरा मैसेज, टाइम्ड आउट भी कर दिया तेरे को 5 सेकंड के लिए। ओ माय गॉड, कोई नहीं, 5 सेकंड बाद यू विल गेट टू चैट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आई वांट आर्टिफैक्ट्स जो कि इसको एचपी प्रोवाइड करें एंड गुड सपोर्टिंग कैरेक्टर। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉर्टिंग डालते हैं एचपी के बेस पे। और सेकंड सॉर्टिंग, सेकंड क्या दें इसको, एक एचपी चाहिए और अगर इसकी एनर्जी रिचार्ज जल्दी होगी तो ये जल्दी जल्दी टीम को सपोर्ट कर पाएगा।
तो मैं सेकंड कुछ नहीं डालता, अभी फ़िलहाल मैं एचपी पे डालता हूँ और इसको क्वालिटी पे सेट करता हूँ। सो ये है, यहाँ पे मेरे पास 3 स्टार है, एचपी 430 सबसे ऊपर आ रही है। और इसको अगर मैं दूंगा एडवेंचर वाला तो फिर इसको, हाँ एडवेंचर फ्लावर, इस पे 2 पीस सेट पे इंक्रीज एचपी बाय 1000, तो एडवेंचर वाला चूज करते हैं। एचपी 430, एलिमेंटल मास्टरी 14 है, ये एलिमेंटल मास्टरी 14 है। सो आई एम गोइंग टू इक्विप दिस एडवेंचर्स वन। इसके बाद माई पंख, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं पंख को? तो हियर अटैक गिव्स एचपी, और ये एडवेंचर्स का ही है तो इसको ले लेते हैं। नाइस, ये लकी डॉग का है। और ये क्या है? ये भी लकी डॉग का ईगल फेदर है। अटैक 28, एचपी 100। फेदर, यस यस यस, हाँ फेदर बोलते हैं इसको। थैंक यू लूफी। और ये वाला था फ्लावर फेदर। तो एचपी 1000 हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया है। नाउ वी विल सी कि अब कोई एनर्जी रिचार्ज वाला कुछ मिले तो। एनर्जी रिचार्ज, सो यहाँ पे देखते हैं एनर्जी क्रिट एचपी एंड एचपी। HP crit damage and HP more here. हाँ, आई एम जस्ट गिविंग आर्टिफैक्ट्स। अभी कल ही ओपन हुआ है तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे तो सिर्फ डेफ और HP आ रहा है, बाकी ये सही है। 4 पीस सेट हो जाएगा, डेफ और अटैक +8, डेफ और HP, बट 30% मैक्स HP ओवर 5 सेकेंड। कौन सा लें, डेफ लें या ये वाला लें? इसमें 100 बढ़ेगी, इसमें फ्री की HP बढ़ेगी। आई थिंक यही वाला ले लेते हैं। HP 5.2%। शो मी योर पीटी। पीटी क्या होता है? HP crit damage, HP, and this is def and elemental mastery. Healing bonus HP, आई थिंक इतना बहुत है। अभी बस मुझे देखना है, मेरे पास सारे कैरेक्टर के पास 5-5 आर्टिफैक्ट्स हैं ना पूरे। कल थोड़ी शॉर्टेज पड़ रही थी। इसके पास नहीं है, इसको दे देते हैं। इसको चाहिए अटैक वाला। अटैक 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 अटैक, हाँ। 2 piece set, 2 piece set. Elemental mastery will be increased, def will be increased, so better is this HP and def. HP and elemental mastery 14, and this is HP and def, but elemental 80, 14 and def by, let me take this one. बैनर पे जाओ एंड हिस्ट्री पे क्लिक करो। पीटी मींस रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू पुल्ड ऑन द बैनर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दिखाता हूँ। आई विल शो। पहले जो तुम बोल रहे हो वही दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे आगे तो आई नो कि सबके पास पूरे 5 आर्टिफैक्ट्स हैं। अभी मुझे साइनो के जो मैंने इस पे स्पेशली एनर्जी रिचार्ज वाले जो हैं, इसको मेरे को अपग्रेड करना है। ओके, यू आर सेइंग पीटी बैनर हिस्ट्री, साइनो वाला ही देखना है ना? यही था क्या? हाय निशांत। आगे
एक मिनट रुको, मैं धीरे धीरे करता हूँ। ये क्या है, इसमें कुछ आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, दिस इज सेकंड, थर्ड। ये अच्छा मिला था, फ्लूट मैंने लगाई हुई है। सायु कैरेक्टर मेरे को 3 बार मिल गया, तो इसकी 2 कॉन्स्टलेशन अप हो चुकी हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज मेक श्योर टू लाइक। आज बर्थडे है भाई का यार, आज बर्थडे के दिन तो लाइक में कमी मत करो। साइनो के बाद से, साइनो मेरे को यहाँ पे मिला था, साइनो मेरे को एक ही मिला है 5th पेज पे। थैंक यू निशांत। साइनो मेरे को यहाँ पे मिला है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हैं, और इसके अलावा 20 विशेज हो चुकी हैं इधर। उसके अलावा पावर भी दिखाएंगे, क्या कह रहे हैं उसके लास्ट पेज लेकर चलो। लास्ट मतलब किधर, 1 की तरफ या इधर शुरू की तरफ? अच्छा, 5th से 6th 7th 8th 9 10 11। मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ रही है, जस्ट मैं वो लेके फिर आगे करता हूँ। हेलो, हाँ भाई, थैंक यू। हाँ, अकेला अकेला कर ले, आए तो है ना। कल आएगा, कल? अरे अभी तो वो चल रहा है नवरात्रि। हाँ हाँ, मिलने मिलने आ जा, नहीं तो अपना ये 5 6 7 8 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को मिलते हैं, कहीं चलते हैं। 8 अक्टूबर को मिलते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है। हाँ, बस अभी स्ट्रीम स्टार्ट करी थी मैंने। स्ट्रीम स्ट्रीम यूट्यूब। चल मैं करता हूँ फिर, है ना? मस्त है सब, फिर फ्री होकर कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय, थैंक यू। हाँ भाई, 73 पीटी पे साइनो मिला। भाई जो भी था, मैं अब देख रहा हूँ मैंने कितनी विश कर दी। यहाँ से शुरू हुई ना ये, और 5वें पे जाके मिला मेरे को। बीच में आर पता नहीं क्या क्या मिल गया, 3 3 वो मिल गई थी बीच में। 73 पीटी का क्या मतलब हुआ ये? 73 विशेस, उप्स। अच्छा, ज्यादा ही है। अभी मैं इसमें भी ट्राई कर रहा था, यहाँ पे इसका भी चेक करते हैं। इसमें मुझे अभी तक कुछ ढंग का नहीं मिला, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे? अच्छा ठीक है, अब हो गया। अच्छा, इसमें इतनी ही करी है अभी मैंने। एवरी 90 पुल्स एक 5 स्टार कैरेक्टर और वेपन गारंटीड होता है। जब 5 स्टार कैरेक्टर मिलते हैं तो पीटी सिस्टम रीसेट हो जाता है, एंड 50-50 चांसेस होते हैं कि आपको बैनर वाला फीचर्ड कैरेक्टर मिलेगा या कोई दूसरा। तो अगर बैनर वाला कैरेक्टर मिला है तो 50-50 विन, और नहीं मिला तो 50-50 लॉस। हाँ, चलो जो भी है, इतना इसके बारे में मैं अभी एक और पढ़ लूंगा। थैंक यू इतना समझाने के लिए। मेरे को तो था भाई, मेरे को साइनो चाहिए बस। जब तक साइनो नहीं मिला, मैं ऊपर करता ही चला गया, करता ही चला गया।
हाँ मतलब कोई और 5 स्टार कैरेक्टर मिलेगा, बस ये वाले नहीं मिलेंगे जो फीचर्ड है। एक बार इसका भी खोला था, एक दो बार। इसमें मुझे थोमा मिल गया था। कुछ ज्यादा ही खोला हुआ है इसका भी। अबे इसमें भी आ रहा है साइनो लिखा हुआ। अच्छा ये दोनों कैरेक्टर का दिखा रहा है क्या यहाँ पे, दोनों चैप्टर का? क्या बेकार है? साइनो? समझा नहीं मैं। नहीं साइनो मेरे को तो अच्छा लगा, पर मेरे को साइनो की ना ये बढ़ानी है। कहाँ चला गया? एनर्जी रिचार्ज ये है। इसको बढ़ाना है एनर्जी रिचार्ज को, तो मैंने इसके आर्टिफैक्ट अभी डाले हुए थे, एक दो को अपग्रेड करना पड़ेगा। कहाँ पे था? ये है एनर्जी रिचार्ज। मैं सोच रहा हूँ इसको, ये है तो मेरा 2 स्टार, पर इसको अपग्रेड करने का मेरे दिमाग में आ रहा है। और किसी में ऐसा सीधा सीधा एनर्जी रिचार्ज नहीं है, क्योंकि विदाउट एनर्जी ना ये इतना मस्त नहीं है। और ये 2 स्टार वाला ही है, बट और कुछ है नहीं मेरे पास। एक बार सर्च करता हूँ कि इस एनर्जी रिचार्ज में क्या अभी मेरे पास कुछ और अच्छा है क्या। इसमें तो एचपी उचपी आ रही है, क्या है ये? एनर्जी रिचार्ज पे सॉर्ट कर रहा हूँ, ये एचपी दिखा रहा है। पागल है क्या ये? हाँ, बस्ट के लिए भी तो लगता है ना एनर्जी रिचार्ज। मतलब जो क्यू वाली हमारी जो सबसे अल्टीमेट होती है, उसके लिए भी तो ये रिचार्ज काम में आएगा ना? या फिर अभी तक मैंने जो समझा सब गलत समझा? मुझे लगा, मुझे तो यही लगता है एनर्जी रिचार्ज उसी के लिए आता है, बर्स्ट के लिए। एलिमेंटल मास्टरी तो चाहिए ही चाहिए। मैंने सारे नंबर 1 जो एनर्जी रिचार्ज वाले हैं वो इसे ही दे रखे हैं। इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा। मैक्स लेवल है इसका, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। यही गड़बड़ है 2 स्टार में। चलो कोई नहीं, लेट्स मी स्टार्ट द गेम। हाँ ये क्यू क्यू वाला जो है, ये सबसे फास्ट कैसे बढ़ता है? एनर्जी रिचार्ज, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो इधर वाला है। ये एनर्जी रिचार्ज से बढ़ता है, एलिमेंटल मास्टरी से बढ़ता है? एलिमेंटल मास्टरी से तो आई थिंक डैमेज बढ़ता है ना। और अभी तक मैंने अपना डेजर्ट ओपन नहीं करा है, तो मेरे को डेजर्ट भी ओपन करना है। प्लस अभी मैं शुरुआत में आर्कन क्वेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बड़े दिनों से वेट कर रहा था मैं। नेविगेट। हाँ उसमें बस्ट फॉर्म में तो उसकी एनर्जी रिचार्ज हमेशा ही रहती है, मतलब तुम बस ई पे क्लिक करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ। बट मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग आ रही थी, जो मैं देख रहा था, कि एनर्जी रिचार्ज से क्यू भी जल्दी बढ़ता है, जो हमारी मैक्सिमम अल्टीमेट होती है। ऐसा नहीं है क्या? या फिर और कोई तरीका है उसको जल्दी बढ़ाने का?
क्योंकि मैं दूसरे जो अपने स्ट्रीमर्स हैं जिनके पास मतलब AR60 वगैरह और काफी अच्छे हाई लेवल कैरेक्टर हैं, उनके तो वो हमेशा ही चार्ज रहते हैं। और बीच में मेरा भी कुछ, मेरे एक बार ऐसी टीम बनी थी कि मेरे सारे जल्दी जल्दी चार्ज हो रहते हैं। कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक मिनट, जैसे मैं इसके टैलेंट पे गया और ये लेवल 4 पे है, तो यहाँ पे इसका आ रहा होगा ना, ये कूल डाउन इसका 20 सेकंड का है, तो 20 सेकंड बाद मैं इसको यूज कर सकता हूँ, बट बढ़ेता तो ये एनर्जी रिचार्ज से ही है ना। चलो एनीवेज, चल जाएगा पता। एनर्जी रिचार्ज डिफॉल्ट 100 पर होता है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी रिचार्ज यूज नहीं कर सकते, पर कुछ सिलेक्टिव कैरेक्टर जो चाहिए होता है बस। अच्छा ओके, जिनकी ज्यादा एलिमेंट ज्यादा एनर्जी यूज होती है अटैक में, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना। ये कौन सा, अच्छा मैं इधर पे है ना। पहाड़ के ऊपर जाना है क्या मेरे को? मुझे लग रहा है पहाड़ के ऊपर ही जाना है। वो पहाड़ के ऊपर वाला फिर कुछ क्यों नहीं खुला यहाँ पे? ये वाला टेलीपोर्ट मेरा ओपन नहीं है, अब इधर से जाना पड़ेगा। चलो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। ओए 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 ओए, कहाँ जा रही है चुटकी? रुको एक मिनट, एक चीज करनी थी। इसके बेचारे के पास वेपन एकदम बेकार वाला है, तो इसको थोड़ी देर साइनो वाला वेपन दे देते हैं। नहीं दे सकते, कैन नॉट इक्विप। लो हो गया काम बस फिर तो। इसके पास वेपन है ही नहीं और ये फाइट में घुस गया। यार ये यहाँ पे कहाँ पहुँच गया है, कुछ दिख नहीं रहा। कहाँ खोपचे में बैठ के फायर ले रहा है। लो गिर गया नीचे। जिस चीज का डर था कि नीचे ना गिरे, वो ही हो गया। लो फिर अब पूरा ही नीचे गिर जाते हैं। अब ऊपर चलो। यहीं से चढ़ जाऊं क्या? कहाँ से? वहीं दीवार के पार मार रहा है मेरे को। अरे क्या कर रहा है लड़के, ऊपर चढ़ जा। नहीं गिरेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी एकदम से हाथ नहीं सेट हो रहा। ऊपर से मैं यहाँ पे गलत जगह आ गया जहाँ मुझे चाहिए नहीं था। चल आराम से चढ़ जा। हाँ तुम नीचे अंदर से ही मान लो, दीवार के पार से ग्लिच कर लो। ओहो चढ़ जा, यहाँ से नहीं जाएगा। चलो हटो।
ओ इसके अंदर ये भी है, तो यहाँ से कहीं से ओपन भी होता होगा। कोई हिली गर्ल्स की तो मैं अभी ऐसी तैसी करता हूँ। ओके इधर कुछ नहीं दिखा मेरे को। आना बेटा जरा। आई थिंक इस खिड़की में से जाना होगा। Do your worst. Don't get too close. Propagate. Check this out. The fortune slip was right. आईपैड में खेल रहे क्या? नहीं आईपैड में कहाँ खेल रहा हूँ। कहाँ गया ये लड़का? वो खड़ा वहाँ पे। अरे क्या कर रहा है? कहाँ चल, हवा में ही मार रहा है। ये वाला बढ़िया था। क्या कहाँ मुंह दे रहा है ये? देखो हटो यहाँ से, चलो। चेस्ट। हम्म ठीक है। Finders keepers. आज यार ऑफिस का बहुत काम था, अभी फ्री हुआ था बस। तो मार्केट नहीं गया मैं। बाकी मैं अभी थोड़ा वीडियोस वगैरह भी देख रहा था कि विच वन आई नीड टू बाई। पहले मैंने सोचा था कि Finders keepers. आईपैड एयर लूंगा, बट अब मेरे को लग रहा है मैं आईपैड प्रो ही ले लूंगा। ये ब्लू बर्ड ये हमारे साथ रहती है। ये अभी नया मिला है कुछ, तो यहाँ पे दिखता है इसका कुछ। ये है ये। Made from stark paper, this layer has the appearance of bird and fittingly was given to you by Cloud Retainer. While it may be called a device, you cannot see any additional mechanical components here. Well, not from the outside anyway. It seems that this adapter's skill has him. Mechanics have improved even further. I don't know है क्या, बस ऐसे बस दिखने में अच्छा है। कंपेनियन पबजी की तरह, हाँ बस वही मान लो, कंपेनियन मिला पबजी की तरह।
ओके अबे यार यहाँ पे वो एक हाँ यहाँ से जाना था ना, यहाँ से नहीं, इधर से। कितनी सारी चेस्ट मिल गई, नाइस। अब इनको देख कितने मजे से पेलता हूँ मैं। Spring forth. I got you covered. अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे। अरे वो खत्म हो गया क्या? नाइसली डन। चेस्टों का तो गुब्बार लगा पड़ा भाई यहाँ पे। चेस्ट ही चेस्ट है। हमारे कैरेक्टर की एचपी भी फुल होगी, इतनी चेस्ट थी। मजा आ गया। और वो जो था ऊपर, वो भी मेरे को मिल गया ना। ओके नाउ ऊपर जाना है। मुझे तो अच्छा लगा कैरेक्टर ये। शील्ड भी बना देता है, डैमेज भी अच्छा दे रहा है। उसके बाद हमारे पास कैंडेंस है, बट कैंडेंस कोई मतलब हीलिंग कैरेक्टर अभी कोई नहीं है मेरे पास फिलहाल। बारबरा या फिर बैनेट, दोनों मैंने हटा दिए। हीलिंग कैरेक्टर खुद कैंडेंस ही है ना, वो हील करती है। अभी नया नया है तो। गो टू माउंट तयनेंग, यहाँ पे मारता हूँ ना इनको, अब मजा आएगा मारने में। Fire it up. Grant us your blessing. Pin them down. Leave. Now. ये देख रहा है कैरेक्टर मेरी। Too easy. Don't get too close. नाइस। तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ? Propagate. Fire it up. ओह, अब मैं इतना नीचे नहीं जा रहा। चेस्ट एनीवेज मेरी ओपन हो चुकी है, so I have to just take the chest. The fortune slip was right. ऊपर ही आ गया ये मरने के लिए, फिर नीचे गिर गया। अभी वर्ल्ड मिशंस ओपन नहीं कर रहा। ओके
यहाँ से चढ़ना सही रहेगा। बेन 10 की याद आ गई। ओके, एक काम करते हैं, साइनो गेम प्ले ना, साइनो दिस दिस एंड दिस, और ये वाले कैरेक्टर भी मस्त है और कैंडेंस भी अच्छी है, बट यहाँ से मैं कुछ भी अभी चेंज नहीं कर सकता, बट इसको हटा के मैं थोमा को डाल सकता हूँ, बट इसका जो है अटैक फास्ट है ये, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, पार्टी एक और बनाता हूँ, पार्टी 3 एंड पार्टी 4। फर्स्ट प्लेयर इज गोइंग टू बी साइनो। कहाँ गया मेरा my first 5-star Ready character? to do my utmost. Second is going to be the traveler, that Just is what will we HHP. come across this time? Third is going to Thoma, I guess the housework can wait. and fourth is going to be, I can take Candace or I can take Barbara. तो अभी क्या चाहिए हमें, कैंडेंस ही लगाते हैं। What's wrong? So Are you in 20, danger? 19 and 20 वर्ल्ड लेवल 2। देखते हैं लो लेवल ऑफ कैरेक्टर से हम कर पाएंगे या नहीं। एक सेकेंड, मेरी सिस्टर का मैसेज आया, उसको रिवर्ट कर दूँ। ओके, सो लेट्स गो। अभी मैंने एक रीजन से और कैंडेंस रखी है, क्योंकि उस पे हमारा जो वॉल क्लाइंब है दैट इज 20% लेस, सो विच इज ह्यूज ऑन गुड सपोर्ट फॉर टू क्लाइंब दिस माउंटेन। ये महामंत्रा, पता है ये हिंदी नाम है इसका, सुमेरु की बहुत सारी जगह है, जो मैं कल सुमेरु का एक मिशन कर रहा था, अरानकेया वाला जो है वो, उसमें बहुत सारी जगह जो है ना ऐसे हिंदू नाम पे दे रखी हैं। वरुणा तो बिल्कुल क्लियर ही दे दिया, लॉर्ड वरुण, और उसमें फिर मरण और पता नहीं कौन सा। भाई गेट बंद कर दियो मेन। पायल भी आ रही क्या? थैंक यू। बर्थडे स्ट्रीम चालू है, ऑफिस से आया? अच्छा अच्छा, वो लकड़ गेट बंद कर दो है ना। चलो भाई ऊपर चढ़ गए, ऊपर वाले पहाड़ पे। ओ ओ, यहाँ पे कौन हमारा वेट कर रहा है? इसके लिए तो भाई अब बारबरा को निकालना पड़ेगा, ये तो इतना मोटा तगड़ा आदमी लग रहा है। बिना हीलिंग के तो हम यहाँ मर जाएंगे सारे। हमारे कैरेक्टर भी ऐसे पितू पितू से वाले ले रखे हैं। We can do this. और थोमा तुम भी जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा वेपन नहीं है। साइनो को अपना वेपन Gonna वापस be चाहिए। epic. Sometimes. मेरा But भाई आया ना, वो I'm हमारे not the साथ नहीं best रहता, judge of other people's sense of humor. वो अलग रहता है, वो आया ऑफिस से। लेट्स गो। एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसको जगाने से पहले, क्योंकि ये हवा में उड़ने वाला है, तो इसमें शिट। एम्बर को ले रहा हूँ, एम्बर को।
Amber, reporting. Get him. I'll protect us. Nowhere to run. Well played. Ouchie. सबसे ज्यादा हेल्थ वाली कैरेक्टर मेरी है ये वाली। Let the show begin. Not so hard. अबे क्या चांटे मार रहा है? अब आएगा ना मजा। ओए मैं कर नहीं पाया अंबर से जो मैं करने चाह रहा था। Let's dance. Hi, hi. Oh. Get him. आ गया जमीन पे। Wow, these will come in handy. कजन सिंचन। ओके डेंड्रो नॉट डेंड्रो। उप्स क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे एक जियो कैरेक्टर चाहिए ताकि मैं ये ओपन कर पाऊँ। जियो कैरेक्टर इज गोइंग टू बी नोल क्योंकि एक ही है। I will protect you. I must leave no stone unturned. ओह ऊपर कैसे जाऊं? तो काफी मस्त हिडन थी। ऊपर तो नहीं जा सकता। यार ऊपर कैसे जाऊं मैं उसमें? ऊपर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अपना जियो रेजोनेंस वाला नहीं है जो डब्बा बना के मैं। ओह पीछे क्या है ये तो मैंने अभी देखा है। हवा में उड़ता हुआ सिटी वगैरह कुछ तो भाई नई चीजें हो रही है गेम में।
एक के ऊपर, इसके ऊपर से जा सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ से वहां तक तो नहीं जा पाऊंगा यार। अगर उस वाले पहाड़ पे जाऊं मैं, जो कि मेरे सामने है, मतलब इधर है, तब तो मैं एक बार को उस पे पहुंच सकता हूँ, अदरवाइज तो और कोई Leave तरीका it to है me. क्या? All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. ये ग्रीन है, कुछ इससे कुछ होगा। Propagate! अरे वहां बात कर लो उधर। चलो छोड़ो, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को वापस आना है, बस यहीं पूछवाओगी सारी चप्पल। और अभी जाना है, वहीं पे जाना है आई थिंक। सो लेट मी टेक दिस गाय बैक। मिस्टर बेनेट, कम बैक। I won't hold you back. आई नो। फैन है, एनिमो कैरेक्टर चाहिए क्या अब यहाँ पे? सीली, सीली विल गाइड द वे। अच्छा यहाँ आना था। Look up there. That's the Jade Chamber. जे चैम्बर। Hmm. This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be... Search for a way up to the Jade Chamber. Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Yes, this must... Try using the mechanism. मैं 1 मिनट 2 काम करता हूँ। एक तो यहाँ पे इस भाई को भी हटाते हैं। एनिमो, हाँ वही मैं लेके आ रहा था, एनिमो लेके आ रहा था। एनिमो इज कहाँ भाग गया है? Got a problem you can't solve. Clue me in. और एनिमो के साथ साथ एक लेके आते हैं इसको। I will protect you. Truth hurts! तो इतना ऊपर चले गए, हम ऐसे ही चले जाएंगे। Huh? It only takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon! Alright, let's follow your Oh, hang on a moment. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista?
That's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Oh, it's all coming out now. Guizhong Ballista. द फ्लोटिंग पैलेस। और ये कहाँ चला गया गुइजोंग बलिस्ता? यहाँ पे से वो उधर ही तो दिखा रहा है मेरे को। और दिस इज हाय करण, वेलकम टू द स्ट्रीम। अब मजा आएगा, देखो अब मजा आएगी हमारी डेंड्रो की पावर। Just what will we come across this time? And let's take this guy. I won't hold you back. I know, let's go. Sleep here. चालू हो जाओ। आ गया। पावर देख, पावर देख, पावर। Through me, justice is served. Guilty. You stand condemned. Your penance is due. Guilty. Surrender. Ready, steady, go! अकेले ने पेल दिया इतना। Scatter. Get out of here. Nowhere to run. और नहीं नहीं, ये वाला नहीं। Let the show begin. Go, Propagate. Get out of here. Why do they never miss? Your sins weigh upon your soul. खत्म। Your penance is due. Guilty. गिल्टी। खत्म, बोला था खत्म। अभी मेरा ज्यादा अच्छे से अपग्रेडेड नहीं है तो। Wealth is the foundation on which civilization is built. मेरी हेल्थ कम है साइनो की, मेरे को उसको अच्छी हेल्थ देनी है। सो आई हैव टू गो देयर। ओके, और नीचे भी वहाँ पे हेलिकरल्स हैं और एक चेस्ट है। So let me do one thing. क्विकली मैं साइनो की जगह अभी सायू को डालता हूँ। ये सायू बहुत मस्त काम करती है ऐसे ओपन में। सायू इज हियर। स्विच। ओ, बड़ी लाइट जला दूँ मम्मी इसके लिए वाली बंद करके। अभी एक तो माइनिंग में जो बड़े पत्थर हैं, इसके पास अच्छा वेपन है, मोटे वाली तलवार। ये जल्दी टूट जाएंगे। ओके, और अभी देखना, अभी मजा आएगा। चढ़ जा। अब देखना कितना मजा आएगा।
बस मुझे उसे घुमा के उसको गाइड करना है। Make my escape. Is this an answer from this world? कहाँ से आ गया? रिवाइवल वाली डिश मेरे को कुक करनी है, तो अभी करते हैं। पहले माल चुग ले सारा। एक को उधर भी मारा था। सब हो गया। कुक आई नीड recovery and recovery dish, attacking, adventure and def boosting. recovery dish अभी नहीं खा रहा मैं। restores to max HP and additional HP of selected character. I don't need this. revives a selected character and restore 252 550 HP. so ये वाला लेना है। this is my 2-star dish, तो obviously इसका अच्छा होगा। इसको sort नहीं कर सकते क्या? मेरे को 2-star वाले, ये क्या है? ये भी तो बना सकता हूँ। नहीं बना सकता। ये क्या है मेरे पास? क्रैब रो नहीं है मेरे पास। ओके, क्रैब तो होगा शायद, पता नहीं। क्रैब भी नहीं है। फोकस ऑन बिल्डिंग साइनो ओनली, ताकि वो थोड़ा कैरी करे टीम को। जब AR45 हो जाएगा तब बाकी कैरेक्टर बिल्ड करना। हाँ, साइनो को ही बिल्ड करना है, इसीलिए वो उसी के सारे अटैकिंग वाले जो बेस्ट हैं अभी तक मेरे पास, उसे ही दिए हुए हैं। तो साइनो को बिल्ड करूंगा एकदम मस्त वाला। अरे वो वाला कहाँ चला गया? 3-स्टार वाला आ गया ना। 600 टू रिस्टोर। शिट, ये चाहिए ना। रिवाइव, कुक, ऑटो कुक। सारा खाना खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और बोनस भी मिला, 2 मिल गए। 11, नाइस। अभी और क्या बना सकता हूँ? दिस आर जस्ट हीलिंग डिश। अटैकिंग वाली डिश बनाते हैं। अटैक बूस्टिंग। ओह नाइस, 4 स्टार वाली बन जाएंगी। कुक। कैरेक्टर बोनस है क्या किसी में? कोई कैरेक्टर बोनस नहीं है। बीस बार खुद बनाना पड़ेगा, तब जाके ऑटो कुक का ऑप्शन आएगा। यार बड़ा ही वो करता है। पिज्जा मिल गया, पिज्जा। अब करते हैं ऑल पे। अब देखते हैं और क्या बना सकते हैं हम। दिस इज रिवाइव कैरेक्टर। रिवाइव वाले आई थिंक एनफ हो गए। एक ये वाला बनाते हैं, एडवेंचर डिश। नहीं बना सकते ना, नहीं है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये वाली चीज़ क्या है? रॉ है ही नहीं, एक कम है। और इसके अलावा डेफ की आई थिंक शील्ड स्ट्रेंथ बाय दिस इनको दिस। वैसे मैं ज़्यादा इसका यूज़ करता नहीं हूँ, एक बना ही लेता हूँ। चलो ओके, अभी चलते हैं मिशन पे अपने। जाना है वहाँ। वो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ था ना वो धनुष, तो
कि आगे जाना है मेरे को काफी। कुछ है नहीं आगे जाने के लिए, ऐसे ही उड़ते उड़ते ही जाना पड़ेगा। अरे आ तो गए। Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. No. Wait. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? What? We're just on guard duty. What do you mean, shame? What nonsense! Seize these suspicious intruders. Well, here they come. Line them up and knock them down. Sure, I'm ready. Propagate! Get out of here! I'm out of here. Huh? Scatter! Spring forth! अरे कान दीवार पे चढ़ गया ये। Adventure time! Who goes there? ओ नहीं 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 नहीं, नीचे मत आ जाइयो। Take the target alive! Alive. Propagate! Let the triad! मुझे लगा नहीं था इतनी फाइट देंगे। ये लेवल 40 के गार्ड है और इन्होंने Let's light it up! Take the target alive! Here I go. Take this! Attack! Adventure time! Mythic triad! Get out of here! Out of the way! Take this! Blasted! ओहो, हर बार यहाँ पे कितनी फाइट होती है। Get out of here! Everybody stand back! Attack! Scatter! Take this! Exterminate! Take the target alive!
बेचारे गार्ड खमा पिटते रहते हैं मेरे से. Stop! What's all this about? Lady Kuching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? Kicking. We're invited guests here to look for the Liyue. Well, as it happens, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed in a single... These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So, this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. बहुत कैरेक्टर हैं, बहुत. Anyway, for a mortal to be एक able बार to नेट पे repair सर्च an कर. adepti mech... इतने कैरेक्टर हैं इस गेम में, कंफ्यूजन ही हो रहा था. पार्टी 4 की बन सकती है, 6 की पार्टी बने तो मजा आए. Oh, right. So, Lady Yuheng... Just call me Kuching. Catching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least... We're not taking sides. We spoke with the Adepti. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance. Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area. I'll say it like it is. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism... Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were... Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that... How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can... The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super... I'll stop here. Honestly, You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber is the greatest honor. कितनी बात करोगे भाई? Each brings favor. But wait, that's right. Greeting gifts. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Well then, may we meet again, traveler. Okay. यहाँ से रास्ता ही नहीं है जेड चैम्बर का. That Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we get? Oh, right! Paimon has a feeling that it would be perfect for us. Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one. Okay, floating palace quest completed, and new quest is equilibrium. Look for the ingredients Paimon needs. Paimon खाना बनाएगी. We have to go here. Let's go there first. Shakalaka boom boom. अब shakalaka boom boom के ingredient ढूंढ के लेके आने हैं. Giorana. Okay. किधर जाना? एक पास में ही है, एक पे सर्कल बना हुआ आ रहा है. थैंक यू. ये भी खट्टे से लग रहे हैं.
bushes. That's the one. फाइट शुरू होगी क्या? Whoa! मुझे पार्टी चेंज करनी थी. नहीं, no, I need Cyno, this and this, and slimes are there, so good elemental reaction, but I also need slimes. I can take this lady also, can dance, but it is a okay. I guess the housework can wait. And let's back by 25% deploy. Now just one more thing. इसका भाई का वेपन यार उधारी का वेपन पे जीता है हमेशा, तो इसको इससे चेंज कर देते हैं. कंफर्म. ये स्लाइम के अगेंस्ट ये वाला वेपन बहुत ही शानदार है. Check this out. I'll protect us. मुझे साइनो की हेल्थ बढ़ानी है, तो मैं इससे बस हेल्थ बढ़ा रहा हूँ साइनो की, और कुछ नहीं बस. उसका बेचारे का मुंह वहीं फंस गया. अब आएगा ना. Nowhere to run. यार इसके बाद ना, ये वाला मिशन करने के बाद डेजर्ट जाएंगे, इसको अपग्रेड करने का मटेरियल खोजेंगे. भाई ये लोटस ले लेता हूँ, ये काम क्या होता है. बिजली भी कड़कती है यहाँ पे, मतलब चल कुछ तो निकलवा. Don't get too close. Off we go. Here's backup. Surrender. बारिश की आवाज कितनी अच्छी आ रही है. अभी पहले थोड़े दिन यही वाला, उसके बाद कुछ और. Huh? Did you hear that? No, that was definitely some. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside.
हम भी पेलते हैं ट्रेजर होर्डर्स को। बारिश का मौसम है, अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज लेके जाते हैं। वाओ, फुल चार्ज पे है ये एक काम करता हूँ, रुको। Teamwork is dreamwork. Through me, justice is served. You stand condemned. That was below. Your penance is due. Guilty. Check this out. Surrender. Nowhere to run. नाइस। पीछे एक चेस्ट है, सारे गमले उड़ा दिए मैंने इनके। कंफर्म। Thank you Thank for you your for your help, help. kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. But don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon Sugar Frosted Slime now comes in a beautiful pack. अभी मजा आया। वी हैव 2 पायरो कैरेक्टर्स, तो उसकी वजह से हमारा जो अटैक है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अभी किधर जाना है नेक्स्ट? अच्छा, गो बैक टू ल्यू हार्बर, गो टू मिक्सिंग ज्वेलरी। क्यों नया एक को छेड़ना नहीं? एक को क्या कर रहे हो तुम भाई? इनको मारें क्या? मोटो को मारने में मजा आएगा। Your sins weigh upon your soul. You stand condemned. Freshness preserved. Chill to the bone. My judgment has failed. अभी यही हो रहा है, ये यहाँ पे अपना Ready, steady, go! Surrender.
ये सबसे देर में मरने वाले कैरेक्टर हैं ये। Let's light it up. I got you covered. Fire it up. Flash Frost. ओ बड़ा तकड़ा मारा थोड़ा साले ने, और निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। Don't get too close. भाई अभी रुक जा, तेरे को मैं एंड दिस क्विकली करूँगा। Get out of here. Take cover. That's gonna hurt in the morning. Let's not waste time. In death, a new cycle begins. Teamwork is dreamwork. I अभी always bounce बाद back. में बात। Just watch me. Let's light it up. Get out of here. Why do they never miss? Don't get too close. Let's end this quickly. Fire it up. Let's end this quickly. No, we won't end this quickly. Check this out. Let the show begin. Huh. Hi. Yeah. Huh. देख रहा है कितनी तेज हील कर रही है अपने आप को। फुल हेल्थ होगी इसकी और सारे कैरेक्टर्स की मेरी। Let's end this quickly. Surrender. Here's backup. Go, Barber. Huh. Huh. Hi. Huh. Yeah. मरा भाई मरा। बहुत ये वाला मेरे को सबसे ज्यादा परेशान करता है और बहुत ज्यादा वो करता है ये डैमेज। और इसने सबको हील कर दिया। बारबरा भाई मस्त है। Our perseverance has paid off. ये यहाँ पे क्या है? ये टूट गया बेचारा। एक ऊपर बैठा हुआ है, इसको तोड़ के आते हैं। चेस्ट। Ooh, what's in here? और ये देख कि मैंने बिल्कुल मेरे सबसे मतलब ये वाले कैरेक्टर तो दोनों लेवल 20 हैं मेरे, साइनो और थोमा तो। एक नया वेपन आया ना।
क्लेमोर है नया। वो कहाँ गई? सुयू जो थी वो। सायू वेपन्स स्विच 4 स्टार एंड वन मोर 4 स्टार। ये क्या है? बेस अटैक 42, एलिमेंटल मास्टरी 36, बेस अटैक 109, एचपी 59, लेवल 20। और ये भाई इसका बेस अटैक 109 है और इसका है एलिमेंटल मास्टरी भी है इसकी अच्छी। और इसके पास क्या है? बेस अटैक एंड एचपी। देखते हैं। दो चीज कर सकते हैं। एक, ये जो ऊपर जाके वो ले सकते हैं, बट उसमें होता है वो देखो सीधा मारते हैं अपने पॉइंट पे टेलीपोर्ट और चलते हैं अपनी मिशन पे आगे। Hey there! A guy called Mung Dan told us that we could get a nice and shiny box from your हैं? store. Uncle Coffee? Mung already ढक told के me रख about दे। it. Thank you both for saving या him. दे दे मुझे अभी। Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, here, this container is itself an antique. Yep. It's... Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with the... Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Jewelry's Look for out of the stock. guide to the We Jade have some new Chamber. items in. Where'd this rain come from? Are you gonna be okay? Here, I'll lend you my coat. Though the clouds may darken. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuang. What's going on here?
कुछ गड़बड़ी है. I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Last match. Everyone at Wangshu Inn किस is चीज one का? of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very ये गेम interesting खत्म कब people. होगा ये पूछ रहा After है. all, it would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. I believe that you've heard of the Archon War. अभी बताता हूँ. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand.
Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. Huh? The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our ये देख सिंचन, ये मेन स्टोरी है आर्कॉन क्वेस्ट, जो शुरू हुई थी जब जो ये ट्रैवलर है इसकी बहन को एक गोड ने उठा लिया था। वो गोड कौन सा है वो हमें नहीं पता। अभी इसका चल रहा है चैप्टर 1 एक्ट 3, और अगर हम अभी का देखें जो 3.1 अपडेट आई है 28 को, उसमें आया है शायद चैप्टर 3 एक्ट 1। अभी मैं चैप्टर 1 एक्ट 3 पे हूँ। चैप्टर 1 एक्ट 4, चैप्टर 2 4 एक्ट्स, उसके बाद चैप्टर 3 जो अभी करंट स्टोरी पे है। इसके अलावा ये तो मेन स्टोरी है, इसके अलावा इसमें होते हैं फिर ये स्टोरी क्वेस्ट, ये तो डेली वाले होते हैं, और वर्ल्ड क्वेस्ट। वर्ल्ड क्वेस्ट मतलब हर एक आदमी आपको कुछ भी देता है, मतलब अगर आपको लिटरली ये गेम को एंजॉय करना है या इसमें रैंक अप करनी है तो ये वाले सारे। और इसमें मतलब आर्कॉन क्वेस्ट को भी ये नहीं कि तुम लगातार खेल सकते हो, अभी इसमें था कि 28 पे आके रुक गया था। एडवेंचर रैंक 28 होना चाहिए। एडवेंचर रैंक करने के लिए हमें ये अदर मिशन करने पड़ते हैं, और ये भी बहुत अच्छे मतलब स्टोरी इनकी भी होती है। स्टोरी वाला गेम है तो इसमें बहुत सारा कुछ चलता रहता है। अभी जैसे हमारी ये वाली चल रही थी चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट, तो अभी इसके मैं पार्ट 2 पे हूँ। ऐसे करके मेरे ख्याल से हर चीज़ के 4 पार्ट होते हैं। अभी किसी भी चीज़ को मैंने फुल्ली कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी पूरा कंप्लीट नहीं है, मतलब एक दो ये बस ये वाले जो छोटे वाले होते हैं ना इंडिविजुअल क्वेस्ट, बस यही पूरे हुए हैं। और इसके अलावा आप इसमें जाओ यहाँ पे, तो ये सारे इवेंट्स जो कि मतलब हर 2-2 3-3 दिन के लिए चलते रहते हैं, 16 दिन के लिए, और बाकी यहाँ पे है। तो दिस इज काइंड ऑफ ए नेवर एंडिंग गेम। बट मेरा क्या है, मेरा मन है कि जो आर्कॉन क्वेस्ट है ना, मैं उसके लेवल पे आ जाऊँ कि जब भी नया रिलीज होए तो मैं सीधा जो लेटेस्ट रिलीज हुई है उसको खेलूं, ना कि पीछे पीछे का खेलते हुए आगे बढ़ता रहूं। तो इसलिए मेरा फोकस मेन आर्कॉन क्वेस्ट को करने में ही, और आर्कॉन क्वेस्ट को करते हैं तो सारी चीज ये अपने आप धीरे धीरे नेविगेट भी होती I रहती feel है। like there's something I forgot to do. I tidied the courtyard, put the tea on. It's probably just my mind playing tricks. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. इजी है बट लंबा है ना, जैसे अभी जो रिलीज I आया have उसमें जो invited you स्टोरी का two अपडेट here आया, as friends. वहां तक जाने के लिए And when एआर friends कितना come over चाहिए? to play, our enjoyment comes first. Naturally. Ooh! Isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are 35। talking about it. Everyone's after a piece ऊपर of से paper अटैक from that रेट्स एंड wall. डैमेज अपने आप It's इंक्रीज हो super जाता है। famous. That's because that wall अटैक records रेट the और ये year's क्या समझा secrets. नहीं मैं। Merchants have always been attracted जब to एआर बढ़ती है secrets. तो हमारे ये रेट But बढ़ the जाते हैं। secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? Rather special, अच्छा। really, and I think you're quite aware of that. पर ये If ना रिलैक्स possible, होके खेलने वाला I'd गेम है, like to have स्टोरी your को एंजॉय trust. करते हुए। But if you would ऐसे नहीं कि choose मतलब the बस more भाग रहे हो भाग trustworthy रहे हो भाग रहे हो, person क्योंकि between myself and और Kuching, कैरेक्टर बिल्ड करना एक अपने आप में पूरी साइंस है। you'd pick Kuching? Nah, I had a feeling.
I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long... Well, I must say that quite a few... I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very... I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation. And also, with Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So... It's all right. I like direct people. Hmm. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. जे चैम्बर का एक आर्कन How क्वेस्ट about है, this? नेक्स्ट अपडेट You में can pick any वो one हार्ड object होने वाला here है. as you ओके, please, वीकली and you एनिमी may है. take it with you. वीकली एनिमी. Paimon was just waiting for you to say that. Let's see. What? One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices. Just imagine. How much more? Let's grab one. The biggest one. Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's... Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Sigil of लालची permission, पाइमोन. something, something, Fatui, research, copy. Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing... Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of... But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what the... Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go then? हवा में. Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she's... That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been... Anyway, we'll see if you... Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these... Head to the location marked on the paper. ड्रैगन वाला कौन सा फाइट? देख, हवा में है. हाँ, अभी किसी ड्रैगन से फाइट नहीं हुई. लास्ट फाइट वो ही हुई थी. जो तुमने सबने देखी थी वेंटी के साथ में जो थी, उसके बाद से तो ड्रैगन आया नहीं.
ये कभी चालू नहीं होते, इसके लिए मेरे को कुछ अच्छा सा कैरेक्टर चाहिए। एक चालू करता हूँ एक बंद हो जाता है। हाँ जियो जियो से नहीं होते ये ये एक को चालू करूंगा एक बंद हो जाएगा। जियो का तो मैं समझ गया। I will protect you. या तो किसी ऑर्डर में करने हैं जो अभी मैं समझ नहीं पा रहा। अब इसकी 20 सेकंड में आएगा। देख वो बंद हो गया। मुझे बस कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए जिसको जल्दी 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 वो मैं कर पाऊँ। क्या ले रहा हूँ मैं? Wish me luck. जोंगली बीच में खड़ा रहता तो अपने आप सारे ऑन हो जाते उसके। अच्छा वो अपना वो डंडा सा गाड़ देता है ना, उससे हो जाते हैं सारे। इसके बाद डेजर्ट जाऊंगा। अबे यार वो मोटे वाले घूम रहे हैं। मर गया क्या एक बार में ही? The fortune was right. Nowhere to run. कुक करने को मिल रहा है। ये क्या है? स्टोर अटैकिंग वाली नहीं कुछ है क्या अपने पास? अटैक बूस्टिंग ये कर लेते हैं ना। ओके और यहाँ पे है क्या कुछ? अबे दो लेके वैसे अटैक बढ़ तो रहा है तो दो ही रखते हैं। ब्लैक टेस्ला क्या कह रहा है? थोमा के पास तो वेपन है, वो चेंज और हीलिंग के लिए बेस्ट है। हाँ वो मैंने उससे लिया है ना। ये वाला जो वेपन Really इसको did मैंने spend दे a रखा lot था ना ये recently. वाला। Only 10 more are left. ये मैंने कैंडेंस को Still, दिया था, 10 more फिर is ये भी better than no अनलॉक हो गया। more. एक ऊपर यहाँ पे पहले वो अनलॉक कर लेता हूँ जाके टेलीपोर्ट, फिर जाऊंगा आगे। नहीं तो फिर मिशन में निकल जाते हैं तो टेलीपोर्ट छूट जाते हैं। बे चढ़ जा मेरे भाई, क्यों नौटंकी दिखा रहा है?
भाई सुमेरु कितना डिफिकल्ट है निशांत। वो मैं अरनाया वाला क्वेस्ट कर रहा था 2 दिन से, मैं उस पे स्ट्रीम कर रहा था ना ट्विच पे। नीचे चला गया, किधर है? पता नहीं कहाँ सुरंगों में घुस घुस के इधर से उधर, उधर से इधर। Let's light it up. Futile. Surrender. Done. Ooh, what's in here? कोई ना इनुजुमा जब अनलॉक होगा तब पता चलेगा हर्ड क्या होता है। हाँ वो मैंने इनुजुमा की ना मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो पता नहीं लोग कैसे कैसे बता रहे हैं, यहाँ से जाओ उसके नीचे घुसो इसमें घुसो। मैंने कहा ये सब छोड़ो अपना, थोड़ा जब ये बढ़ जाएगा कैरेक्टर का स्टेल्थ तो चले जाएंगे उसमें इनुजुमा। हाँ जी बताओ, कुछ तो होगा। Let's move before the trail goes cold. And they look really mad at us too. कुछ आवाज तो आई है। Trapped. You caught me. इन लोंडों से फाइट लिए बिना थोड़ी जा सकते हैं। Frozen. Crisp. Judgment is upon you. Guilty. Your penance is due. You stand condemned. Nowhere to run. Go, Barbara, go! Let's end this quickly.
parchment has... बेचारे को मैं हर बार पिलवा देता हूँ इसको. We teamwork is dreamwork. Let's dance. Oh, hi. I will end you. Say this quickly. Go, Barber. Hi. Flash frost. That seemed to work. Make my spider. Freshness preserved. Frozen food. I must collect myself. Get out of here! Out of the way! Oh, yeah. Protect us. Yeah, hi. Chill to the bone. Surrender! Let's light it up! Nowhere to run! भाई तू आ, तूने तब से दिमाग खराब कर रखा है. Away I go. Yeah. Nowhere to run! Surrender! This was well done. Pointless. Nowhere to run! Let the show begin. An unfortunate fault. Take cover! Adventure time! Yeah! Shouldn't get careless. Have a load of this. Let's move. Have a load of this. Through. और कहाँ है तीसरा? बंद हो गया. मुझे क्या नीचे करके आना है फिर ऊपर आना है, क्या करना है मेरे को यहाँ पे? बेनी के लास्ट वाला स्किल हीलिंग और कैरेक्टर, हाँ पता है मेरे को, एकदम सही है. हाँ फाइट के बीच में डाल दो बस उसको और उसके बाद उस पे खड़े होके बस मारते रहो इधर उधर. सब लेवल अप करके EXP कार्ड क्यों वेस्ट कर रहे हो? अच्छा मुझे मन था बस मैंने कर लिया. मुझे था कि सबको 35 करना है मेरे को. वी तो मुझे पता है, वो नहीं मैं कह रहा. ये एनिमो की वो खड़ी हुई है ना कुछ. Nowhere to run! वो एनिमो कैरेक्टर वाली वो ना पाइप से मैं ओपन कर रहा हूँ. क्या है यार, मशाल से जला रहा हूँ. ये वाली बंद होगी आई थिंक. यहाँ पे एक करनी है और फिर फटाफट जाके ऊपर जलानी है. वो कहाँ है? ऊपर ही है ना.
अबे बावले भूत ऊपर चल। तीसरी कहाँ है? मैं तीसरी ढूंढ रहा हूँ। 3-4 होती है ना ये नॉर्मली। पता नहीं, छोड़ो। ये आई थिंक कॉप मोड में होगा। ऊपर एक और मोटा खड़ा हुआ है। There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. Paimon's seen this pattern नीचे एक before. स्विच था। But where? दिखा नहीं, चल दोबारा देखते हैं। Oh, Paimon knows. It looks just like... But how did a relic of your death die end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it was said to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission and being able to channel divine power in battle? And the plot thickens. We'll need to... Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being... मोटे से लड़ता हूँ जाके, मजा आएगा। Adventure time. Your sins weigh upon your soul. Not breaking a sweat. Penance is due. Guilty. You stand condemned. Can this be? Your penance is due. कतई खा गया भाई। यार जो ये अपने साइनो उसमें फॉर्म में होता है ना, मेन वाली, हाथ नहीं लगने देता किसी को भी। अब यहाँ पे ये 4 हैं और इधर भी हैं और इधर भी हैं। एक बार ट्राई करता हूँ, अगर जली रहेंगी तो फिर, पर उससे बहुत टाइम लग जाता है। रुको, छोड़ो, अभी कुछ नहीं ट्राई करता। इधर एक मार्कर लगा के छोड़ देता हूँ। फिर आएंगे बाद में। ये वाला वेपन अच्छा है। Mission accomplished. Can I go back and sleep now? बहुत अच्छा डैमेज देता है ये वाला भी। मुझे तो अच्छा लगता है भाई, काफी अच्छा डैमेज देता है।
स्विच कहाँ बता रहा था तो बताना। यहाँ पे तो मुझे तो बस एक ये मशाल सी दिख रही है जिसको मुझे लाइट करना है। और एक ये है, ये पता नहीं क्या है। इसका नहीं यार, ये देखना एचपी बढ़ा रहा है और अटैक कर रहा है और taking damage generate a shield which absorb up to 20% of max HP. This shield lasts for 10 seconds. Shield भी दे रहा है। While protected, a shield the character gains 12% increased damage. ऊपर जाऊं वापस से? पहले मेरी ये वाली शील्ड खुलवा। मैं कहाँ पे मिस कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। जोंगली के पास जाऊं? चलो ठीक है, ये तो लगा ही रखा है यहाँ पे। चलो जोंगली के पास चलते हैं। अबे पापा बैठे हुए हैं। Let's get out there and make some friends. This world is full of unsolved... Check this out. Propagate. Get out of here! Stop it! Supporting fire! Spring forth! Propagate! I'm going in! Off we go! Scatter! Propagate! Let's light it up! Who's our next target? कहाँ हो जोंगली भाई? वो खड़ा। Adventure time! अबे Off we go! कहाँ भाग गया? Adventure time! वाटर प्लस डेंड्रो हाई इफेक्ट। हाँ मैं वो ही करता हूँ।
उससे वो छोटे 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 वो बन जाते हैं और on उसके time. बाद फिर I myself only arrived डैमेज करो moments ago. पायरो से तो Did you मस्त वाला enjoy your डैमेज होता visit है. to the Jade Chamber? It was so big and pretty. उसकी एचपी and कम है ना, जितनी उसकी expensive. एचपी होगी उसी के I हिसाब had से never शील्ड काम seen आएगी. such a fancy schmancy place before. मैं तो 2 पायरो इसलिए रख Indeed. रहा था क्योंकि अटैक It's second to none in 25% all of इंक्रीज हो रहा है Liyue. ना उससे. Then you met with Ningguang, I बट trust? मुझे ये डेंड्रो भी चाहिए था. What did डेंड्रो you से talk मस्त about with her? डैमेज आता है. She's super rich and so yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold हाँ, Keqing, कॉली अच्छा है. Ningguang is more of a businesswoman at heart. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her truth. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the करूँगा. second most important thing to her. पहले आर्कन Even if कर she लूँ, ever उसके gave बाद up the डेजर्ट position एंड of देन मेरा Tianquan. प्लान है The फिर ये Jade Chamber is only जितनी भी ये second. क्या What's होती the है most डोमेन्स, important thing to her सारी then? डोमेन्स करनी है. मैं अभी तक एक भी डोमेन Why, जाके नहीं Mora, देखी. of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered. That is how the Fatui have always been. No matter what they may be planning, इसके पीछे क्या आ you रहा है must वहाँ be पे? careful ये क्या when है? dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting and do you Yes, as a matter of fact, there is. Today we'll be. glaze lilies? But why did we come all the way out? Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flower. No. Those lilies. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild Glaze glaze lily. lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, सारे we डोमेन must कैसे grind up कंप्लीट the wild करोगे? lilies उसमें से and आधे place तो the अपग्रेडेबल powder in a मटेरियल वाले censer of डोमेन है. everlasting incense. अरे But कंप्लीट I'll need मतलब your जा assistance जाके in एटलीस्ट gathering ट्राई these तो करूंगा flowers. कि वहाँ है क्या, क्या मिलता है, क्या करना पड़ता है. अभी तो मैं जाता ही नहीं उसमें. Do you mean need to make them so you need me to sing? No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more. So how good is your singing? Really? What? We'll only know once he starts singing. Search the white glaze lilies with Zhongli. It's time to sing whenever you're ready. वो टैप करके भी व्यू कर सकते हो. टैप करके मतलब क्लियर्स थ्रोट. Da 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 da. What happened? Mm. These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Get out! Ow! That's gonna hurt in the
अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी। Through me, justice is served. You stand condemned. Guilty. Your penance is due. Guilty. Stronger than I anticipated. बस यही होता है, हर बार मर जाता है, इसकी हेल्थ कम है ना, इसके लिए आज ये बनाए हैं मैंने। तीन, अबे मर जा। Let's light it up! Everybody stand back! Surrender. Let the show begin. Propagate. That's gonna hurt in the morning. Why do they never miss? Nowhere to run. Stronger than I anticipated. Surrender. Out of the way! अबे ये प्लांट कैसे हैं? Let's dance. No! Ink! I'm going in! Yeah! Nowhere to run. I'll protect us. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. हीलिंग आर्टिफैक्ट थोड़ी दिया हुआ है मैंने उसको, डैमेज वाला दिया हुआ है। This little monster is known as a whopper flower. GWAC, इधर आजा बाहर मेरे पास। Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we... Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Gun Are you. you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my... Ah! That reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. इलेक्ट्रो आर्टिफैक्ट चाहिए, अटैक वाले नहीं। अच्छा Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. अच्छा, तुम कह रहे हो कि सबसे पहले एलिमेंटल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। Ah, well, I
met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, ये only वाला our लास्ट balance वाली of लाइन में तेरी Mondstadt समझा नहीं. remains of the चार्ज first कैरेक्टर seven. के लिए चार्ज The other मेन five, डीपीएस, तो मेन including डीपीएस के Inazuma's लिए riding अटैक shogun, अटैक चाहिए या are फिर no एलिमेंटल longer the एनर्जी same चाहिए. friends from 2,000 years of the current seven Archons. The youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his उसके लिए passing. अटैक चाहिए ना. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 तो मैंने years उसको ago. इसीलिए अटैक दिया था. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this? साइनो को इसीलिए मैंने farewell? पूरा अटैक दिया हुआ है ना, ताकि Huh? वो मतलब This- बढ़िया अटैक करे. This is a little sudden. मुझे वो इलेक्ट्रो वाले आर्टिफैक्ट नहीं As a समझे थे, तो mortal, पीछे सजेस्ट कर रहा I've था. never मुझे लगा dared इलेक्ट्रो to मतलब तो imagine एलिमेंटल Liyue आर्टिफैक्ट ही without हुए. Rex Lapis. But as an adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and adepti has now reached. Huh? Did you just say as an adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. I also know where wild glaze lilies can be found. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before? Indeed, I did. I know this tradition. Wow, so you really know your stuff. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, if you would excuse me, I should And that just about does it. Given the ease of picking glaze lilies, Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. So you must be careful to take the time to step back and re-examine. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. एक सेकंड. All this standing around is making me so sleepy. Okay, let's go.
Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate time? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, however, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. Surely the Liyue Qixing are not... Their boneheadedness is known throughout the lands. And what now? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Only now do they want to start keeping tabs on us? Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let... It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gate. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, Traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be... So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching. But where could we find him next? Where would he go at a time like this? ओ फिर से पहाड़ चढ़ना है। Golden Shadow recommended party level 37. Your pursuit of the true beings you are very... Oh, चिल्डे का डोमेन यहाँ पे होगा। हाँ, चिल्डे party level is lower than recommended, so क्या करा जाए? Attack, 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 defense, defense. वाटर एंड इलेक्ट्रो कैरेक्टर है तो मुझे आई थिंक कायो चाहिए ना।
मेरे ख्याल से शील्ड ले लेता हूँ, बट फिर डैमेज कौन देगा? डैमेज वाला कैरेक्टर तो मेरा एक यही है, साइनो। और वाटर एंड इलेक्ट्रो घुस जाता हूँ, पहले एक बार फाइट करके देखता हूँ। वही है, पहले एक बार फाइट करके देखता हूँ, आगे देखते हैं क्या होगा। This is the Golden House? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. This is where all of Teyvat's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back to... It's quiet. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. फर्स्ट फॉर्म इजी, सेकंड बिट डिफिकल्ट। चिल्डी वैसे बहुत अमीर है। कितने तो मोरा के वो झोले दिए उसने हमें। आई कैन हैव ना, फूड वूड में खा सकता हूँ। You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? अच्छा, ड्रैगन के साथ फाइट होगी, तू कह रहा था ये रेक्स If you लैपिस were के for साथ फाइट Tui, I होगी। imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information up. Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. Okay. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But either way. We now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway. Fighting talk, I love it.
Now let's see you live up to it. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Passable effort. Guilty! You stand condemned! Poor timing. Celestial Voyager! Germinate! ओह नाइस, क्या मार रहा है भाई चिल्डे. So quick to flee. Let's dance. Cowering already? Surrender! Scatter! A clear shot. You've made some progress. Careful now. I'll protect us. फंस गया. Try this. A fine opportunity. Go, Barbara, go! How unbecoming. Poor timing. Through me, justice is served. Guilty. So quick to flee. Not bad, not bad. Not bad. Your penance is due. Good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Let the show No begin. use hiding back there. Hi. Get out! Get out of here! Nowhere to run. I'll crush you. अबे उसने भी हील कर लिया. No use hiding back there. Let's dance. It's a crowd. You've got some skills. Nowhere to run. यार क्या क्या चला रहा है वो. थप्पड़ पड़ा बहुत ही तेज वाला. Come on, we can do it. All you do is run. Crush you. It's a crowd. Raging tide. Gosh. Everybody stand back! Nowhere to run. Has your luck run out? Propagate. Your Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. ये क्या हुआ, मैंने मारा तो उसको बढ़िया वाला. That's about as far as you'll get.
Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Oh, nice. Childe converted into Terminator. Tata Gila. This is going to cost you! बेचारी पाइमोन. You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? बेचारे हीलर से फाइट कर रहा है यार मैं. Hand the Gnosis over now. Don't make me take it from you. We didn't take it! Let the show begin. Let's light it up! Nowhere to run. Well played. Let's dance. Surrender. चांटे मारते हैं भाई. क्या कर रहा हूँ. Propagate. कहाँ भाग गया. Pointless. अठारह 17 26 क्या ही डैमेज हो रहा है. It's a crowd. Adventure time! Off we go! Get out of here! Help protect us. मैं बस इसलिए चल रहा हूँ अब तक क्योंकि इसकी HP बची हुई है मेरी. Come at me again. My उन्हें मार दिया.
कहाँ गया टर्मिनेटर? Die here. Scatter! Get out of here! Huh. Adventure. Why do they never miss? Let the show begin. Go, Barbara, go! Nowhere to run. Well played. Surrender. I'll protect us. Stronger than I anticipated. Futile. Surrender. Off we go. I'm going in. Die here. Nowhere to run. Judgment is upon you. Guilty. फाइनली भाई, फाइनली टर्मिनेटर को पेल दिया. Back to normal again. Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. लेवल 35 की पार्टी 38 की बोली थी, बट किसी You तरह never भाई had any निपटा chance दिया. of beating me to the Gnosis. थैंक यू You had डेडशॉट. no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of... What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting जो वो to say बुढ़िया the है least. जिसके पास चाय की प्याली थी, वो मुझे लगता है वो It रेक्स seems that लैपिस the है. guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of... As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away, and the truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak.
अरे Unfortunately, जब हमने वो we सेंट cannot be चढ़ाई picky थी about our उस पे methods मूर्ति as पे तो Fatui वो उसको harbingers. पसंद आई थी ना Children must all बुढ़िया learn वाली to eat सेंट. their vegetables sometime. तो मुझे तब से वो So डाउट what है are कि you वो planning बुढ़िया to चाय की do? जिसके पास वो I चाय will की awaken प्याली the सी थी god that lies dormant वही beneath है. Guyon's stone forest. A god? Osile, overlord of the Vortex, who was ओपी defeated बंदा by है. Morax, the Geor Archon in the Archon War, and who has remained, if such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity. Do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geoarchon spears for a time अभी should be देखते हैं. no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geoarchon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? ooh la la सुनामी आ गया है तो ooh nice. Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? For dragon What are you doing here? Zayo. Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, सब आगे. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? We don't. Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must यार stop क्या that मस्त monster टर्न before लिया it है gets any गेम ने. closer क्या to मस्त Liyue टर्न लिया है. Harbor. मजा आ गया यार स्टोरी So the में. Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. What? But all of you were supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh?
The Chi Sing did once research the matter of the Guizhong ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Awesome. The 3 Adepti are manning the Guizhong ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Don't see a killjoy. You've only just begun. It isn't time for a fight here. भाई ये वाला साला गड़बड़ कर रहा है. Miscalculated. Scatter! Not breaking a sweat. Out of the way! This should be fun. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. Ready, steady, go! The Fatui! Their attacks are unrelenting! Here comes the. We'll answer for this afterward. Every last one. Their penance is due! Is dead condemned! Stay right there. The ancient god's attacking again! There are so many Fatui too! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy! That light from your body, it's like the time until your curse! Wow! It's a matter ping shockwave! This granny's really strong! This isn't good. You're not going anywhere. Hi.
the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside, and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight! My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! वो कहाँ से पढ़ रही हैं ये? ये किसने हमें भागने की पावर दे दी इतनी तेज? Protect the east HP, okay. Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Oh, nice! 3 forms of energy I got from the Adeptus. Simply awesome, man. Your sins weigh upon your soul. You're not going anywhere. Guilty. Your penance is due. Guilty. भाई साइनो ना होता तो मैं कैसे निकालते वाला मिशन? Power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Through me, justice is served. Your penance is due. I guess this is it. Judgment is upon you. Guilty. You stand condemned. Look at me. Just... बे 74 किसकी रहेगी? The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades. Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. I am having goosebumps. It's working! We just need to keep this up! Oh, what is this? Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this?
Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. ओह, पूरा जेड चैम्बर ही उसके ऊपर दे मारा। जो दबा दिया उसके नीचे। यार कितना मस्त था यार ये। जेड चैम्बर रिपेयर करें, दिखाएंगे क्या करना है। The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. अच्छा, The effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the overlord of the vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. अभी नहीं देखे Save मैंने। your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. आज देखता हूँ निशान सब कुछ। Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? नहीं अभी नहीं One बताया। doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. अब आएगा शायद। What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him अच्छा, डोमेन how के the बाद। past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective.
What are you trying to say, Outlander? आउटलैंडर कह रहा है डिस्कॉर्ड चैनल बना लो अपना, एडेप्टस और मोर्टल बात कर लिया करेंगे. Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the four winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? Moon I am Carver. Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks, although I am a mere mortal soldier. यार ये वाला जायो जब ट्रायल के लिए मिला था, क्या मजा, क्या अटैक किया था भाई इसने. Down. Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those when danger is near, everyone always protects me. Valorant तो खोला भी नहीं मैंने जब से Genshin Impact चालू हुआ है. इतना इंटरेस्टिंग गेम छोड़ के Valorant में कौन जाएगा. 25,000 रुपए लगे हुए हैं मेरे Valorant में. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, First we कौन है? wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. Yeah. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the First city है to Hot Head rely Panda. on the Adepti's power. Although their blood बेचारी is बार-बार weak, कोई there is still strength to be फेलता रहता found हूँ मैं in हर those जगह, we बेचारी call सबको mortals. हील भी करे, The डैमेज भी time करे, of contracts सारी between gods काम and बार-बार ही Liyue करे. has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to... Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the conqueror of demons means. The city, one fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have won. Fair enough. कह रहे बाढ़ में जाओ, अब चले. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace, and a child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom? Paimon doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? भाई सबसे ज्यादा मजा आया जब साइनो के पास उन्होंने कहा सारी आर्कन पावर ले भाई, फास्ट भी बन, तेरी एनर्जी भी रिचार्ज होगी, डैमेज भी कम होगा. वो भाई वो तकड़े तकड़े वो फटुई के मॉन्स्टर आते मोटे मोटे हथौड़े लेके,
क्या पेला भाई साइनो ने उनको रख रख के मारा, मतलब तुरंत उसका बस्ट आ रहा है, तुरंत वो सबको मार दे रहा है। डैमेज पता नहीं कितना हो रहा था यार उस टाइम पे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो मारे जा रहा था सबको। मस्त सीन था वो वाला। हाँ बट डैमेज साइनो का उसमें ज्यादा अच्छा हो रहा था ना, जैसे मैंने बीच में ये वाले कैरेक्टर्स भी रखे थे, बेनेट और ये एचएचपी वाला ट्रैवलर वाला कैरेक्टर भी यूज किया था, तो उस उनका भी डैमेज तो काफी था। पर वो कितना सही था, भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है। ऊपर चढ़ जा बंदर। Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng funeral parlor isn't in the best... We've come to see Zhongli. Could you... Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. Doesn't the Northland Bank belong to the Last time we saw Zhongli was... Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that if... बेनेट भी रखा हुआ है मैंने, और वो भी रखा हुआ है, बारबरा भी। बेनेट का हील एक बार बड़ी देर में आता है, You call बारबरा this तो बस पेलती cooperation रहती between है। harbingers. Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? नहीं, लो लेवल नहीं, उसकी तुम एचपी ज्यादा रखते हो तो बहुत जल्दी हील कर देती हो सबको। Friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And... you! You're also... It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly. No, don't let her get to you! You've yet to gather the powers of all 7 elements, and our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best to keep things peaceful this time. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit... Paimon knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's Enemy up to you. of eternity. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of... You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. The Gnosis, please. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise is solid as stone. गेम लोड हो रहा है। Sanctimonious. What? So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist and all, but... I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you, and splat!
this big dragon Rex falls out of Lapis the ये खुद sky है and Zhongli. all of Lyric goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see. Am I right? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue together with the Adepti. Even boulders that can Archon withstand मतलब कि whirlpools भगवान will ना. erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come, until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, I stood motionless among the crowds, asking my... Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age. So I feigned my own death. यही तो Gathered है the यार Rex cast of Lapis. Child, the Adepti, and the Liyue Chising to play their roles together on the stage that was Liyue. That's right, which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Lilith back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has... In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Chising, credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo Archon to fulfill our contract. At my request, she kept This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. They seized the opportunity to supplant Liyue as divine protectors. Huh? That doesn't... On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo Archon, Liyue would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Hey, haven't you learned the Liyue saying, don't always call it as you see it? Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapolyarny Palace and seek an audience with Her Majesty. Fine. I'll meet you there later. इतना सा रिश्ता कौन है उसको ले जा के दे रहे हैं सारे जिनोसिस और वो एयर वाला एनोसिस. Now then, is there anything else you wish to ask me? Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a Gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However,
I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts. भाई ये थक गया As अपनी for the ड्यूटी करते bargaining करते. chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. तसरिस्ता उसकी आर्कॉन है, बर्फ वाली, बर्फ देवी है वो. Leave. हाँ 3700, 3700, not 3500. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. अबे ऊपर कहाँ से जाऊँ? जीना कहाँ है? दिखा क्यों रहा है बावला सा? Zhongli is the only one who fought in Archon War and still here is an Archon. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the Raiden heels of the Shogun incident वो with बिजली Rex वाली. Lapis, too. Say, do you think the person who assassinated our lord? Now that you mention it, that's very possible. I mean, it all fits together. Still, what sort of... forget it. Guess... अंकल गाओ भाई, ये बगल के आंटी हैं, जबरदस्ती का दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए. Oh, well, since we're going through with this... So Rex Lap... Oh, come on. There's only one real possibility in mind. The Fatui? Shh! Lower your voice. Hear ye all, the Qixing's words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation on what the Qixing's announcement said. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. Could the Qixing already have known that Rex Lapis... Did Zhongli... Exactly, right?
Ooh, seems like the... धीरे बोल छोटू उठ जाएंगे go to the site of Miko. It's Ningguang and Keqing. Are they saying something? Are there speeches? As said previously, 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. we, the people of Liyue, were indeed The long, unending dream. Now that we have awoken from our dream, will you stand with us? So concludes the words of her eminence. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking her... Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes name your price. You deserve that much. Name your price. Well, could you help me put up some missing person posters? मेरे भाई जिसने लेट बर्थडे विश किया था. Talk to people taking part in the ride. Rex Lap. तो Perhaps. क्यों बात करनी है खामखा. But it seems, well, ये that's... सेंट वाली लेडी है ना जिसने हमें सेंट दी थी. As for the mortals at ये वाला मोटू. Rex Lapis. Rex Lapis. Now that I perhaps Adventure time. Yeah. Hey, Zhongli! ओह जब अभी उसने बोला कि पोस्टर लगवा देते हैं. Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions. And here you are looking all... Why would I not feel more right? If the two of you can spare the time, I should... Ha! That sounds like big... You're right. I do like the Mora. अभी तो बोला. थोड़ा पीछे करके देखो ना कि if you can place the posters in the world. जब उसने वो missing person. But why would Morax lack Mora? और वो As छोटा the हुआ है वो. Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, when I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. So I had to... Oh, no wonder. Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were but since you weren't used to not being able to just make... Well, we were only spending Fatui money. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I will treasure the memories that I made as Zhongli. Traveling, that is true. But the... Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another... Paimon thinks we've heard that one before. Raiden That Shogun. is the case. And since Raiden is also the Shogun... That said, the
people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, but if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, this is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. That's how people in Tibet? But starting from last year, the Raiden Shogun... Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's board. They want to seize visions? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because... Whoa! The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods. And of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. All right then. Was there anything else you wish to know? That was a good one. Failing, that said, the reason why the Qixing were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit, I hinted as much to the Adepta. How did I accomplish that, you ask? All right then. Was there any... Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Have patience. Chapter 2. इतने सारे आर्कन क्वेस्ट आ गए. The Church is rising, involuntary sacrifice. A path through the storm requires adventure rank 30. You share your payment before embarking. Okay, and my current is... Let's go find some treasure. $29. Okay. अभी वो वाला बचा हुआ है मेरा जो तुम बोल रहे हो डेड शॉट. ओके, टाइम टू गो टू डेजर्ट. कौन सा वे लें? ये फिर ये और फिर ये, या फिर ये पहले यहाँ चलते हैं, आगे फिर देखेंगे. तुम लोगों ने खोल ली डेजर्ट, निशांत और डेड शॉट? नहीं, पहले दिन ही खोल दी होगी.
स्टोरी क्वेस्ट खत्म भी कर दिया, क्या बात है, बढ़िया। अभी यहाँ से मेरे को जाना है, अभी मैं कोई क्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैप ओपन कर रहा हूँ। गो हियर, 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 देन हियर एंड देन हियर। इधर जाऊँ या नहीं, बट ये 3 ओपन करता हूँ पहले, यहाँ पे जाता हूँ। अगर ये ऊपर ऊपर हुआ, किसी गुफा के अंदर हुआ तो नहीं। Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. भगवान जी कंजूस हो रहे हैं, हील नहीं दी। दे दी। सुमेरु यार क्या मस्त है। और कल मैंने सुमेरु की कैपिटल देखी, वो तो भाई अलग ही सीन था उसका तो। इसी पेड़ पे है शायद वो ऊपर। नीचे गिर जाऊंगा, मेरे को लगता नहीं मैं इतने ऊपर चढ़ पाऊंगा वहां तक। यहाँ खड़ा हो जाएगा क्या पता नहीं। मरा मरा मरा। Couldn't break the curse. मर गया, चल कोई बात नहीं। Nowhere to run. वे कहाँ भाग रहा है, नीचे गिर गया मेरा। ओए ओए ओए। एक टुकड़े के चक्कर में इतना नीचे गिर जाते हैं। कौन है नीचे? कौन लड़ने मरने को तैयार हो रहा है? मुझे नहीं लड़ना। इतना ऊपर चढ़ना है।
क्या ही पेड़ है ये। बात सुमेरु तो पूरा अवतार मूवी से बनाया और हिंदी माइथोलॉजी इन्होंने डाली है इसमें। क्या मस्त सुंदर है यार सुमेरु। इस बार तो चढ़ जाएगा। इस पे है क्या? इससे भी ऊपर है क्या? ये घर किसका बना हुआ है यहाँ बीचों बीच? अपने आप में टैलेंट है। Okay. Party 4 is going to be adventure party, जिसमें कि हम रखेंगे What's this wrong? Are you in danger? and this Leave it to me. and this Our mission begins. and where is the animo? This सारे कैरेक्टर जो कि एनर्जी कंजप्शन को लूज करते हैं। बड़ा सोच समझ के डिजाइन किया है इन्होंने सुमेरु। Not that easy. ओए, और इधर से आना था शायद। इधर से वो दिया भी हुआ है स्टैमिना के लिए। No, next is here. Navigate. Another target tracked down by Outrider Amber. ये वाला तो टेलीपोर्ट इजी था। वो पिछले वाला बड़ा टफ था ऊपर जाके लेके आना।
Okay. Now next is this. ये ऊपर है I think. I'll race you there. Level 37. Bet you can't keep up with me. Well played. No one escapes my sights. Go, go, Barret Bunny. Another target tracked down by Outrider Amber. I need Dendro character as well. In Sumeru, I need Dendro character. There's still a long road ahead. Propagate! Abhi, I'm just exploring the. Let me have Cyno. Ready to do my utmost. डैमेज बहुत कम आ रहा हो, डैमेज का कुछ करना होगा. हाँ नहीं, ये मैंने अभी एक्सप्लोरिंग पार्टी बनाई है अपनी, जिसमें कि फाइट नहीं लेनी. ये तो जस्ट मैं ऐसे ही देखे, मैंने कहा चेस्ट वेस्ट ओपन कर लेते हैं. ये डेंडर कैरेक्टर ये क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ये उसमें आएगा ना फिर, स्टोरी क्वेस्ट में बेनिफिट करेगा ना मेरे को. ये हरा नारा वाला वही है ना, जिसमें वो बहुत कुछ लेके जाना है.
अभी मुझे ऊपर जाना है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे इसका यूज करता हूँ। उधर जाना है। अभी मैंने सारे वो वाले कैरेक्टर लिए हैं, जैसे कैंडेंस से वॉल क्लाइंबिंग 20% बूस्ट बनता है, एम्बर से ग्लाइडिंग में, और हिजोऊ से भागने में। तो इसलिए मैंने ये सारी पार्टी बनाई है ताकि मैं अब कुछ भी करूं। और साइनो ले लिया फाइट लेने में। अब साइनो को ऊपर ले जाना है ना। देख, मैं इतनी लंबे वॉल पे ऐसे कूद कूद के भी चढ़ पाऊंगा। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करता हूँ। यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। मर गया साई, मर गया। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। अब ऊपर जाता हूँ फिर से। 20% बूस्ट तो मिला। 3-4 जंप ले लिए, नहीं तो 3 में खत्म हो जाता। मैंने 4 या 5 जंप करे थे शायद। परछाई कितनी प्यारी आ रही है। अरे ये जो चिड़िया साथ में उड़ रही है तेरे में, वो गुब्बारा से उड़ता रहता है, इनका कुछ होता तो है नहीं, बस खामखा हमारे साथ में चिपके रहते हैं। इसमें ऐसा होना चाहिए ना कि ऊपर से कुछ हीलिंग गिराता रहे हमारे लिए, हम कहीं भेज दें इसे। आई थिंक हिल कलर लग रहा है मेरे को यहाँ पे। ओहो, ओ हिल ही नहीं है इसकी तो। मैं किताब क्यों खोल के बैठ गया। अब कर लो, क्या करोगे। Impressive. Flee. Go, Barret Bunny! Do your worst. Just yield. Let it rain! बच गया मैं। Hey! Where do you think you're going? Bet you can't keep up with me! You're exposed. I have failed. I'm sorry. Get him! No escape! Sick of this game. हमें मार दिया इसने तो।
can't keep up with me. हाँ क्या मस्त मारा मैंने। Opening a chest is like unwrapping a gift. नहीं अब मैं बंद करने वाला हूँ। भाई सारे कैरेक्टर निपटवा दिए, अब शांति से जो करने आए हैं वो कर लो। वहाँ ऊपर जाके अपना टेलीपोर्ट खोल लेता हूँ मैं, और उसके बाद भगवान जी वाली पे जाके अपने सारे बंदों को लेके आऊँगा। कोई बदतमीजी नहीं अब जब तक ऊपर नहीं जाता। चढ़ तो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है ऊपर तक। एक आध वो बूस्ट वाला फूल मिल जाए बीच में, और अगर ये भी गिर गई बस तो हो गया काम। चढ़ गई भाई। आर्कोन अपनी सारी पावर दे देना, हम ऐसे जैसे अभी उस वाले फाइट में हुए थे, हम मस्त भागे दौड़े कहीं भी चढ़े कूदे उतरे और एनर्जी फुल रहे तो मजा ही आ जाएगा। वो रहा उधर। सबसे पहले भाई अपना टेलीपोर्ट ओपन करते हैं, बाद में देखेंगे बाकी का कुछ भी। वर्शिप के लिए कुछ नहीं है ना मेरे पास। चलो अभी बंद करता हूँ स्ट्रीम, फिर कल मिलते हैं। आज डेजर्ट ओपन कर लूँगा मैं। बाय बाय।